I want to ask you. The question is OTT film. Is film riskier? OTT better hai? How do you decide where do you want to put it up? So it's not risk that's the defining thing, because both are risky, both can work, you can go wrong either place. Story needs legs. Some stories are films. They can only be done as a 3-act structure, start, middle and end, but in a certain format. इतनी ही कहानी है. There are some stories which are like novels, which have इस कैरेक्टर की कहानी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, और उसका आर्क ये है. उसके लिए आप सीजन्स चाहिए, उसके लिए आपको एपिसोड्स चाहिए जहां आप उसको बॉडी देना चाहते हैं. सो अ फिल्म इज इन अ वे ऑलमोस्ट लाइक अ शॉट ऑफ, इट्स लाइक अ रेड बुल शॉट, एंड अ फिल्म इज लिटरली लाइक अ शो इज लिटरली लाइक अ राजधानी की थाली, जहां सब कुछ है, कटोरियां हर एक का महत्व है. सो बेसिकली कहानी डिसाइड करती है कि आप क्या बनाएं, नॉट द रिस्क फैक्टर, बिकॉज दोनों में रिस्क है. बट या ये कहूंगा कि स्ट्रीमिंग में प्रोड्यूसर इज सेफर, बिकॉज आप फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस पे आपका कलेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. आप एक एक्स अमाउंट के लिए फिर शो बना रहे हैं जिसमें आपको इतना मिलने वाला है, वो प्री डिसाइडेड है, ना बाद का ना पहले का, इतना है. अब इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट खराब करें, you will make losses. Right. That is a different story. But today we live in a world where we have bound scripts, we have prep of months, we shoot like an army, we do post like an army. So वो नहीं होता. It's very precise cut work. Films are riskier in terms of reward, but the reward for films is much more. The risk ratio reward is different. लॉटरी भी लग सकती है, बिल्कुल, और डूब भी सकते हैं. और बॉलीवुड आजकल ज्यादा डूबता हुआ नजर आता है, एक्सेप्ट अ फ्यू फिल्म्स. आपको लगता है फॉर्मेट फॉर्मूला जेडेड हो गया है, ओटीटी के साथ कंपैरिजन है जो ज़्यादा लाइव वायर है, लॉन्गर प्लॉट्स हैं, घर में बैठ के देख लो, क्या व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कंपटीशन? आर दे कंपीटिंग विद ईच अदर? I'll let him respond to. मेरे लिए पर्सनली आई थिंक मंथन होता है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है. ये एक पीरियड ऑफ चेंज है जहाँ हमारी बहुत सारे सेट पैटर्न्स थे. एज अ व्यूअर आपका देखने के ऑडियंसेस से, सिनेमा इज कम्युनिटी विंग, 100 लोग जाते हैं साथ में देखते हैं. टीवी वॉज फैमिली विंग, 4-5-6 लोग सदस्य एक टीवी पे बैठते हैं. अब प्लेटफॉर्म जो स्ट्रीमिंग जो डिवाइसेस हैं वो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, आईपैड पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, और आप शायद नेटफ्लिक्स देखें, आप हॉटस्टार देखें, आप अमेजॉन देखें या जी देखें, राइट. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं. व्यूइंग हैबिट्स बदल गई हैं, लोगों का एक्सपोजर बदल गया है. और ये जो कोविड के 2 साल थे जहाँ बहुत लोग घर में थे, they have been exposed to the best of the world. Right. They have also been exposed in a way. The good part that has happened is अब हमारा जो फिल्में हैं they are no longer की हिंदी फिल्में, आज तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, Right. तेलुगु, मराठी, बंगाली, हर तरह की फिल्में हैं, बिकॉज आप उन्हें डब कर रहे हैं या सबटाइटल्स देख रहे हैं, तो आपकी एक्सपोजर बढ़ गया. अब आपको उनकी रीमेक नहीं देखनी है, बिकॉज आप ओरिजिनल देखे बैठे, यूट्यूब पे देख लिया आपने, घर में बैठे देख ली. अब एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड कि ऑडियंस बदल के एम्पावर हो गई है एंड दे हैव मैच्योर्ड. सो नाउ यू टू गिव देम दैट. तो ये वो चेंज का पीरियड है, और चेंज इज लाइक बर्थिंग, राइट. इट्स पेनफुल, राइट. सो ये वो पेनफुल पीरियड है जहाँ कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट स्लोली इट विल ऑल कम टुगेदर एंड एक सर्कल ऑफ लाइफ है. आज नीचे तो कल ऊपर जाएगा. लेकिन एक एक्टर के लिए मनोज जी, हाउ डू यू सी इट? यू नो, जब आप आए होंगे चंपारण से यहाँ, तो आपने सोचा होगा कि बड़ा स्क्रीन, क्या बात है. Does that also influence your decision? Because ultimately, your devices, it's nice, but for an actor to see yourself on big screen, is it a different high, or you evaluate the craft more than the size of the screen? Definitely, after doing theatre and learning the craft, you know, over the years I've been learning the craft. So my passion for the craft is immense. Definitely, that is there. But you know, for community viewing, you know, going to a theatre for people to watch me on the big screen, I always wanted that, and I have been part of you know, many films till the pandemic you know, knocked on our door. But now I have, when there is another medium, I have to make the most of it, and most of the great stories are being told on OTT. So and also I leave the decision of going to the theatre or on OTT completely on the producers, because it is their money and I don't have any say in that. Bandaa, we thought that we'll go to the theatre, but somewhere the studio, Z Studio and you know, our Vinod Bhanushali ji and their production, they
they just put the data in front of me about the footfalls. And they said that, we want this film to go to each and everyone because this is a very important film. Correct. But the moment you go to theater and footfall is less, people are going to view this or pull it down as a flop film. You definitely don't want to do that to your film because this film is an important film. It's just not another story. Yeah. So that is where they have taken a decision that they will go on OTT and create awareness about the film massively, so that people on the first day itself they watch it and they become the mentor of the film. That is very, very important. I think the decision was very right. Initially I was not that much convinced, but now when I see that the response that I have seen in New York, the response I'm seeing on you people's faces. The trailer is powerful. Yeah, the trailer you are saying. It's like it socks you So between the eyes. Yeah, so that means the studio has taken the right decision about this film being showcased on Z5.